Hi. So we are going to talk about a company called Godrej Consumer Products. That's a GODREJCP over here. This is one of the companies. हम लोग यहाँ पे GODREJCP को स्टडी करेंगे और स्टडी करने की रीज़न एक ही है कि मुझे लगता है कि एज ऑफ 9th of June आज मार्केट क्लोज अभी हो गई है, ये 853 में क्लोज हुई है और मुझे लगता है कि इसका जो 52 वीक हाई है वो हम लोग स्टडी करेंगे चार्ट एनालिसिस में, एंड देन वी आर गोइंग टू सी that why I think as of today that this is a very good trade for short term, or of course these are all speculations, so please consult your financial advisor for any investment or trading related queries. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें। इस कंपनी में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ और इसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि ये क्यों ब्रेकआउट कैंडिडेट बन सकती है इन वेरी शॉर्ट टर्म, और अगर ब्रेकआउट आई तो किस लेवल्स पे आएगी और कितनी दूर तक ये भाग सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले थोड़ा सा चार्ट दिखा देता हूँ। सो टूवर्ड्स में वो इसी 700 पे लेवल्स पे थी, एंड देन द बिग फैट ग्रीन कैंडल के, और ये जो कैंडल आई थी ये 12 मई को आई थी, और इसका रीज़न था कि इस कंपनी ने एक नए CEO को अपॉइंट किया था और दिस वाज वेरी मच गुड न्यूज़। हम लोग उस दिन 866 लेवल्स पे घुसे थे। मे बी अभी चार्ट देख के देखना पड़ेगा कि वो लेवल पे मैं क्यों घुसाता हूँ, और वो 890 ऊपर चली गई थी और दैट वाज 888 तक गई थी। मुझे नहीं मालूम ये 887, हाँ 887 परफेक्ट, या 888 तक गई थी। सो बेसिकली this was a good move which was accompanied by very nice volume, और ये तब की 52 वीक हाई थी। एक्चुअली अभी की भी 52 वीक हाई है, एंड दिस इज वी आर लुकिंग ऑन एन आवर्ली चार्ट। और फिर ये कंसोलिडेट कर रही थी 866 और 882 पे जाके यहाँ पे क्लोजिंग आई थी, एंड ऑन द नेक्स्ट डे आई रिमेंबर इट ओपन फिर 882 में जाके फिर वहाँ से एक ब्रेकडाउन आया। So the breakdown happened around about 853 levels, and this is exactly the level where we are in. And on the top of that ये अभी बहुत दिनों से फिर ये एक्चुअली नीचे आई, एक अच्छी सी ऐसा बाउल पैटर्न बनाई और फिर अभी इस तरह से इन लेवल्स को टेस्ट कर रही है। सो द गुड थिंग इज़ 860 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और मैं इसके बारे में 2-3 बार ट्वीट भी किया हूँ इन अ वेरी नियर टर्म, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाकी ये एनालिसिस हम लोग बाद में देखेंगे। सो अगर आप देखते हो कि ये स्टॉक कैसे बिहेव करती है ओवर 860, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई हैव ड्रॉन अ लाइन ओवर 859 860 लेवल्स, एंड दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल, और यहाँ पे आके वो एक बहुत अच्छा एक कप एंड हैंडल टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन दी थी, और मैं फिर ट्वीट भी किया था ये 860 लेवल को ट्रैक करने। द नेक्स्ट डे वो 869 पे ओपन हुई थी। इट वाज मे बी दिस कैंडल और मे बी दिस वन। 869 पे जाके फिर यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट कर रही है इन अ वेरी टाइट 850 to 860 रीजन, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द रीज़न कि मुझे ये लगती है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी मूव पेंडिंग है। One of the things which is also important is there's absolutely no volume over here, so ये just consolidate कर रही है. It's giving chance for people to make their positions either in the long or short side. Of course ये एक बहुत interesting zone है, the 840 zone, और यहाँ पे 865 860, सो ये इसी के अंदर ही चल रही है। नाउ हमें देखना होगा कि ये 860 और 870 रीजन्स को ब्रेक करके ये शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकती है कि नहीं। चांसेस हाई है क्योंकि कुछ देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर वर्किंग इन द फेवर ऑफ द कंपनी, सो देयर आर लॉट ऑफ टेलविंड्स फॉर नाउ, और ये मुझे लगती है कि अगर मैं ट्रेड लेना चाहूँ तो ऑब्वियसली आई वुड बी थिंकिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। वी कैन सी इट डिप टूवर्ड्स 26 तारीख को 26th, as well as on 24th it came at 802 803 level over here, और यहाँ पे उसको बहुत अच्छी एक सपोर्ट मिली, एंड आफ्टर 802 803 विद इन अ वीक इट वेंट टू 860, और मैं वही ट्वीट किया था ऑन 24th of May कि 800 एक बहुत अच्छी सिप लेवल है, और मुझे पूरा भरोसा था कि 800 टूटेगी नहीं, और आज टुडे इज़ 9th of June, सो
at least 20 days have passed, some 12 13 trading sessions हो गई हैं, but still we think we see that 800 levels was not breached. It made a low of 802 over here and then it reversed. और मैं वही बोलना चाह रहा था तब, that's what I wanted to say that time, that and you see this was made on 24th, the 800, and on 31st it went for 860. So within a week we were able to make some very good money, because we are going to get 60 rupees out of 8, so that's 7%. 7.5%. So this was a very good money we made in this trade, and then since March 31st and today is 9th of June, so whole of this starting of the June, it's just dancing around this 860 region. And this was exactly the reason कि मैं आज 8th of June, that's yesterday session में मैं बोला था कि 860 is the region which should also be tracked, and that then it was trading at around 855. आज भी वो 859.95 शायद highest बनाई है. So this is actually good signs. On the top of that, the 52-week high is in 890 regions. So I think this is one of the good things which we can see. These are all hourly candles, and let's zoom to 15 minutes. Sorry if it looks really congested. So हम लोग ये करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं. तो क्या हुआ आज ये 850 में खुली और 864 तक गई. ओके, सो आज 864 तक गई थी, समहाउ दिख रहा है, और फिर वो यहाँ से करेक्ट होके इस लेवल पे आ गई 851. ये जो डिप थी, ये डिप थी निफ्टी की डिप, जब आई थी राउंड अबाउट 2 o'clock यहाँ पे. एंड स्टिल वी कैन सी दैट यहाँ पे 845 850 लेवल्स ब्रीच नहीं हुई. So this actually shows that even though there was a sudden weakness in Nifty, still this stock didn't correct as others did. So at least अगर वो 840 region में फिर अगर चली जाती तो समझ में आता. So I think going forward this is one of the very good situation, and I am pretty confident that very soon this stock will give a breakout. So since it was consolidating between 840 and 870 regions, so maybe all time high जो 890 है, this will again get tested. और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक मे बी ऑप्शंस का डेटा भी मुझे देखना होगा. सो मे बी 900 में बहुत सारे कॉल ऑप्शंस कॉल बेच के बैठे होंगे लोग. बट नो मैटर व्हाट, फ्रॉम 860 to 890 दैट्स 30 पॉइंट्स. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ब्रेकआउट आई तो इट विल बी अ वेरी शार्प ब्रेकआउट. एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो 20 25 30 पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, यू विल अचीव दिस विद इन से 5 10 15 मिनट्स. ये रीजन्स बहुत इंटरेस्टिंग होगी और देखने के लिए कि यहाँ पे सेलिंग आती है कि नहीं. अगर ये सेलिंग नहीं आई, सो वी विल डू फर्दर एनालिसिस एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टारगेट. But for now I think this level is acting as a very good 840 regions is acting like a very good support, and within 860 is getting sold off. So maybe tomorrow if the breakout happens, I will try to see what happens around about 880, क्योंकि it might very well be that it goes towards 880 882. The previous resistance was faced over there, and then eventually it will try to consolidate, and if it again takes out 882, अगर वो फिर 882 break करती है तो it will go towards 900 or 905 4 levels. So this or 902 at least achieve करनी चाहिए. So that's all for Godrej Consumer Products. It's one of our very good companies. अगर आप मंथली चार्ट देखते हो तो इसका ऑल टाइम हाई 975 में है और 980 regions में है, and we are over here. So it has been a really good wealth generator over a long period of time, and then eventually in 2018 some sharp corrections came,
and this correction was because of corona, so we should not look into it, but at least it's corrected from 980 levels to 600 levels. 600 was a very good SIP level, I remember. This was way back in 2019. So yeah, because I think maybe this will go towards 900. This will go towards at least 915-20 region. So I am tracking this, and the good thing is every time you see there was a big green candle, as I always say. So theoretically, whenever there was a red candle, it always was much. It used to eat the whole body, but here अगर अगर मैं ये सब clean कर लूँ, so आपको दिखेगी कि the candle which we have, the monthly candle which we have over here for the month of June is just a small body, and it absolutely is totally meaningless compared. ये आप देख रहे हो यहाँ पे. So this is small body. So I really, अगर कोई correction आती तो obviously it would have devoured some of this and tried to enter, go dip towards 800 levels, or rather 750 levels, लेकिन ये हुआ नहीं, and this was able to consolidate over here. As it can consolidate for some time, अगर कुछ महीने तक भी इस region में अगर रह सकती है, ऐसी कोई नहीं है कि ये breakout आज ही आएगा, but given the market sentiment and given the mood of this company and the future prospects, I think because sentiment plays a big role in trying to when you are trying to take a breakout trade. So obviously the breakout is very much dependent on the market participants and smart money. But going forward, I think this breakout should be not a big. It should be coming. ये ब्रेकआउट ऑलरेडी आनी चाहिए थी. यहाँ पे अगर आप पास्ट ये स्टडी करते हो, इट वाज ऑलवेज इन अ टाइट जोन, कंसोलिडेटिंग ओवर अ ह्यूज, ये पूरा मार्च अप्रैल. So these were months where it was in consolidation, and then there's a news came, and then it broke up, and now again it's in a consolidation. So the gap up of 714 till 788, that's a 10% rise in the opening itself. So I will try to stick to these stocks where the market sentiments are in the favor of the company, and let's see. Today is 9th, so I will try to see if anything happens by the end of this week. Tomorrow is an expiry. I don't expect much because of the volatility, but let's see. We have only two trading sessions left on this week. Let's see how this behaves. But my first target would be around about 880, and the next one would be 900. So thanks a lot for listening. I hope this was helpful for you. Thank you.